Ladies and gentlemen, in any taxation system, there are two pillars. There are two pillars, outward supply and inward supply. What do you mean by the outward supply, inward supply? Outward supply simply means that whatever the sales, revenue or income that you have. Inward supply means that whatever purchase you have made from suppliers फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत ही सिंपल है. आउटवर्ड सप्लाई हमेशा आपके सेल्स, रेवेन्यू और इनकम को इंडिकेट करता है. इनवर्ड सप्लाई हमेशा आपकी परचेज और सर्विस को इंडिकेट करता है. तो आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. टैक्सेशन सिस्टम, inward supply and outward supply. If you see your P&L, in your P&L there are outward supply and inward supply. Outward supply, if you see the sales, revenue or income, जो आपके P&L के क्रेडिट साइड में आता है, सेल्स, रेवेन्यू, इनकम. एंड अगर आप P&L के डेबिट साइड में जाएंगे तो आपको एक्सपेंसेस, परचेज दिखते हैं, तो ये आपका इनवर्ड सप्लाई हो गया. तो P&L में जब आप रेवेन्यू एंड एक्सपेंस की बात करते हैं, सिंपली इन ए टैक्सेशन सिस्टम आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई की बात होती है. Now, why this is important to understand from the tax point of view? Because you are working as an entrepreneur or as a business owner. You are running your business. You are finding more growth in your business. You are finding more opportunity in your business. But imagine that you are not fulfilling the outward supply compliances or inward supply compliances. Then what happened to your business, resulting the big consequences of a big problem. So now the understanding point here is that if you are not fulfilling the compliances in your business, probably you are willing to create more and more growth in your business. Probably you are willing to create more opportunity in your business. This growth opportunity will not be created until you are not fulfilling the compliances of the taxations. So मुद्दा ये है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कंप्लायंसेस टैक्स की करनी है. और ये बहुत ही सिंपल एक छोटा सा कंप्लायंसेस मैं आपके सामने बता रहा हूँ. आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड इनवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग इनवर्ड टैक्स इनपुट. इनकी कंप्लायंसेस को आप समझिए और इनके कंप्लायंसेस कीजिए. ये कहां पे कंप्लायंसेस करनी होती है? इफ यू सी द GSTR 1, GST and GSTR 1. So in GSTR 1, you have to simply report your outward supply and corresponding outward tax liability. तो आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको GSTR 1 में रिपोर्ट करनी होती है. इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़ी बातें बताने वाला हूं जो आपको आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग ध्यान देने की जरूरत है. GSTR 1 बहुत सिंपल है, बट इफ यू आर नॉट कीपिंग दिस कंसिडरेशंस इन योर कंप्लायंसेस आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपका कंप्लायंसेस समहाउ आपको सपोर्ट नहीं करेगा. आपका कंप्लायंसेस समहाउ सपोर्ट आपको नहीं करेगा. बिकॉज आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को कहां दिखानी है, किससे मैच करानी है, कौन से रिकंसिलिएशन करनी है और सपोर्ट दिखानी है, ये आपको जानना जरूरी है. तो कौन से बड़ी 5 बातें हैं जो कि आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में आपको ध्यान देने की जरूरत है. GST बहुत ही इंपॉर्टेंट है. GST बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड GSTR 1 तो सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट है. हर के चर्चा में है GSTR 1. GSTR 1 आपने फाइल करा कि नहीं करा, कब फाइल करा, टाइम पे करा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई. GSTR 1 हर के चर्चा में. तो आप अगर GSTR 1 फाइल करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के कंप्लायंसेस करते हैं, तो इन 5 बड़ी बातों को आप अपने ध्यान में रखना. इस 5 बड़ी बातों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, आपके पास नोटिसेस के चांसेस कम हो जाएंगे. आपके पास इतना बैकअप, इतना एविडेंस रहेगा कि आप उसको कभी भी कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. कभी आपका ऑडिट होगा, कभी आपका असेसमेंट होगा, कभी आपको कैलकुलेशंस मांगा जाएगा. तो अगर आप इन 5 बड़ी बातों को ध्यान रखेंगे, आपका GSTR 1 के कंप्लायंसेस हमेशा फुलफिल होगी. So GSTR 1 is one of the important document in your GST. So now the first point that you need to take care is the reconciliations of your turnover, reconciliations of your revenue. So ये reconciliation किसके साथ? रेवेन्यू का reconciliation किसके साथ? आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट है और आपके पास GSTR 1 है.
आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका GSTR1 एंड आपका GSTR3B। तो आपको दो रिकंसिलेशन रखनी है। आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आप GSTR1 में दिखाते हैं, एंड जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रेवेन्यूज आ रहा है करस्पॉन्डिंग आप टैक्स लायबिलिटी आप बनाते हैं, राइट। ये आपको एक रिकंसिलेशन रखनी पड़ेगी, बहुत ही सिंपल रिकंसिलेशन, दैट व्हाट एवर द रेवेन्यू दैट यू हैव जनरेटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट करस्पॉन्डिंग यू हैव क्रिएटेड द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, राइट। इसकी आप एक मैचिंग कीजिए GSTR1 के साथ में। सो व्हाइल यू आर गोइंग टू फाइल फर्निश द GSTR1, मेक श्योर दैट यू हैव रिकंसाइल योर GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई corresponding outward tax liability with the books of account, because in books of account बहुत सारे ऐसे एंट्रियां होती है जो कि जर्नल वाउचर्स हैं, जो कि एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं, जो कि ऑडिट एंट्रियां हैं, आप उसको GSTR1 में नहीं शो करते। तो ये रिकंसिलेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिकंसिलेशन आपको करनी है वो है GSTR1 वर्सेस GSTR3B। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आपको GSTR3B में दिखानी होती है, वो एलिमेंट आपका GSTR1 में नहीं आता है। तो आपको रेवेन्यू रिकंसिलेशन के प्रोस्पेक्टिव से रखनी है कि GSTR1 में आपकी रेवेन्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, एंड सिमिलरली आपकी GSTR3B में आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने कितना दिखाया हुआ है, उसका एक सिंपल छोटा सा रिकंसिलेशन। यह आपको मदद करता है आपके कंप्लायंसेस में। नाउ जब आपने ये कर लिया तो आपके पास पूरा बैकअप, पूरा एविडेंस आ गया। और अगर आपने नहीं किया, और अगर आपका GSTR1 में जो रेवेन्यूज आ रहा है, आउटवर्ड सप्लाई जो आपने दिखाया है, करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपने दिखाया हुआ है, एंड 3B में जो आपने दिखाया हुआ है, अगर इनमें डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस आपके अनरिकंसाइल है, बड़ा डिफरेंस है, आपके पास नोटिस आएगा, आपके पास नोटिस आएगा अंडर रूल 88C। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आप रिकंसिलेशन करते हैं तो आपके रिकंसिलेशन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने GSTR1 में क्या रिकंसिलेशन दिखाया हुआ है और GSTR3B में क्या रिकंसिलेशन दिखाया हुआ है, दोनों का बैकअप रखिए। इन केस इफ यू रिसीव द नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, then there is no any worry point at that point of time. There is no any worry point at that point of time because आपके पास reconciliations है, आपको immediately reconciliations आपको वहाँ पे दिखा देना है, correct? With that, the second point that you need to take care, you need to keep update is that reconciliations of tax liability and tax paid. Now, GSTR1, you have shown your tax liability. GSTR3B, you again shown your tax liability in GSTR3B, but in GSTR3B, you have the input tax credit as well. तो जब आप GSTR3B में देखते हैं तो आपका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है, करस्पॉन्डिंग आपका इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट आती है, आप बैलेंस अमाउंट पे करते हैं। So you must have a reconciliation of whatever the outward tax liability that you have and whatever the tax that you are paying to the गवर्नमेंट एक्सचेकर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है और आप टैक्स कितना पे कर रहे हैं। इसका एक सिंपल रिकंसिलेशन रखिए। GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, करस्पॉन्डिंग GSTR3B टैक्स लायबिलिटी, करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट थ्रू ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, whatever the balance tax liability that you have and whatever that you have paid to the government exchequer, इसका एक कंप्लीट रिकंसिलेशन छोटा सा ब्रीफ रखिए, and that brief will help you to keep update to yourself that your compliances is going on in a correct manner. With this, the third reconciliation that you have to keep is the reconciliations of e-way bill with GSTR1. Now, e-way bill is very important document. What happened during the assessment or audit by the department, they demand the reconciliations of your e-way bill with GSTR1. Because in GSTR1, whatever the revenue that you have shown there, they ask the e-way bill. So the manufacturing industry, right, and whoever is deal with the goods product is need to understand कि जब आप GSTR1 में रेवेन्यू दिखाते हैं तो आप साथ में e-way bill का भी एक रिकंसिलेशन रखिए। Because this e-way bill reconciliation, that whatever the revenue that you have in GSTR1 and whatever the revenue that you have shown in e-way bill, the tax liability in GSTR1 and जो यहाँ पे, तो ये आपकी पूरी की पूरी जो एक complete summary होना चाहिए। So the reconciliations will help you to understand overall that you are complying with the
e-way bill. With that, the fourth reconciliation that you have to take care is the reconciliations of e-invoicing with your GSTR1. Now, electronic invoicing, e-invoicing. E-invoicing is mandatory for certain class of taxpayer whose turnover is more than 5 crore, right? So now the sixth phase has already been implemented. So now it is a common now. There is no any big issues on the electronic invoicing. So e-invoicing, if you have and you are applying with the e-invoicing, that makes sure that whatever the electronic invoice that you are generating, whatever the e-invoicing that you have, you must have a reconciliations with GSTR1, because in a GSTR1 you might be have a different tax classifications. You might be have a different taxations invoice. For example, B2B, B2C, exempted supply, nil-rated supply. There are lot of transactions that you have in a books of account. So in every transactions, electronic invoice is not applicable. But whatever the transaction that is applicable to electronic invoice, you must have a reconciliations of whatever the electronic invoice that you have generated, right? IRN number and QR code with the supporting document, you must have a reconciliations with your GSTR1. So जो भी रेवेन्यू आपने GSTR1 में दिखाया है, B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइस की आपकी पूरी कंप्लीट reconciliations with GSTR1 होनी चाहिए. Because at the some point of time, departments or authorities demanding that please share the electronic invoice copies and how you have the reconciliations, how many invoices that you have generated, how many invoices that you have reversed, and a lot of information that department is demanding. So this will help you to keep updated in your business, and compliances would be in a great way. So that is important for. The fifth that you need to take care is the reconciliations of the tax paid on advance receive and the tax adjustment in GSTR 3B. In case of service, you have received the advance from the customer, so you have to pay the GST on advance. So what is your duty here is to show the advance receipt, advance adjustment in GSTR 1, 3B, and proper adjustments you must have. So if you see that in the same month you have received the advance and you have raised the invoices to the customer, in that case there is no any big issues because it is intra-setup. But in case when you have received the invoice in a first month or raise the invoice in the second month or subsequent month, it means you have to make the adjustment. So there must be a proper reconciliations of how much advance you have received, how much advance you have adjusted, how much advance you have the open, and how you will adjust the open advance by what date, by what expected date. So it is important. Now these are the 5 पॉइंट दैट यू नीड टू टेक केयर. 5 बड़ी बातें जो मैं आपके सामने बताया हूँ, इसको आप ध्यान रखें. रिकंसिलेशंस ऑफ टर्नओवर रिकंसिलेशंस बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट वर्सेस GSTR1, टर्नओवर रिकंसिलेशन बिटवीन GSTR1 वर्सेस 3B नहीं करते हैं, नोटिस आ सकता है. रूल 88C के तहत आपको फिर जवाब देना पड़ सकता है. आपके पास अगर बना हुआ है, आपको सिंपली जवाब देना है और आपको अपने कंप्लायंसेस को आगे बढ़ानी है. तो reconciliations of turnover, with that reconciliations of tax liability versus tax paid, and then reconciliations of e-way bill with the GSTR1, and then reconciliations of electronic invoice with GSTR1, and then the reconciliations of advance receive against services with the invoices raised, right, and there must be a tracker. अगर आप ये करते हैं, आपके GSTR1 की प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाएगी. यू विल फील मोर कंप्लाइड, यू विल फील मोर हैप्पी, बिकॉज व्हाट हैपन, द GSTR1 is the backbone to any other document in your business. And what happen when you start to file your annual return, annual reconciliation, GSTR 9NC, ये बहुत हेल्प करता है कि आपकी reconciliations अगर आपके हर महीने हो रही है, उस reconciliations को अगर आप continuous track में रखते हैं, GSTR 9NC फाइल करते वक्त आपको बहुत ही easy support मिलता है. So that you need to take care. GSTR1 बहुत ही simple है, but it has to be come in a complied way. If you are not complying, this is going to create a big problem. So now what matters to the entrepreneur and the business owner? Ladies and gentlemen, you are doing business, but please focus on the compliances. Please focus
छोटे छोटे कंप्लायंसेस भी है ना, फोकस कीजिए, फुलफिल कीजिए, इवॉल्व कीजिए, अप्लाई कीजिए एंड आगे बढ़िए। कंप्लायंसेस को अगर आप छोड़ेंगे ना, कंप्लायंसेस आपको छोड़ देगा, बिजनेस आपको छोड़ देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंसेस को अगर आप नहीं करते हैं ना, नो मैटर आप आज के रेट में रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं, कल भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट परसों आपको ये रेवेन्यू पेन देना शुरू करेगा। एंड परसों जो भी आप बना करके रखा हुआ है, आपने स्टेबिलिटी जो क्रिएट करके रखा हुआ है, स्टेबिलिटी आपको सर्वाइवल पे खड़ा कर देगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। No matter who you are, no matter what size of business you have, make sure that you have to fulfill the compliance and make sure that you are fulfilling the compliances to create more and more business growth. And while you start to create this, you will have a good flavor in your business. You will be able to create some significant opportunity in your business, and you will find that this GST compliances is helping you in a larger platform to be able to develop and to be able to run with more opportunities and more growth. So now the time has come that you have to fulfill the GST compliance, particularly the GSTR 1। 5 बड़ी बातें मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान से समझिए, अप्लाई कीजिए। In case if you have any questions, any query with respect to the GSTR 1, with respect to the compliances, please feel free to ask me। फर्क नहीं पड़ता है, आप आज पूछ रहे हैं, कल पूछ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जितना जल्दी पूछेंगे, जितना जल्दी समझेंगे, आपका बिजनेस के लिए उतना ही सहायक होगा। सो स्टार्ट टू फुलफिल द कंप्लायंस to create the magnificent opportunity in your business with the help of the compliance. This is Sensing signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.